So good morning, friends. Welcome to today's session on NISM 5A. About this exam, uh, among all the NISM exams, this is the most easiest exam. सबसे easiest है because इसमें negative marking नहीं है. Okay. Having said this, बिना पढ़े आप पास नहीं होने वाले, है ना? तो मैं ट्राई करूंगी जितना मैक्सिमम पॉसिबल है यहाँ पे पढ़ाने को. बट देर आर फ्यू चैप्टर्स विच आर प्योरली थियोरेटिकल इन नेचर, जिसको आपको रीड करना ही होगा, बिकॉज मैं यहाँ पे बताएगी तो भी आपको नहीं समझेगा, तो वो सिर्फ थियोरी है. जो सिखा सकते हैं वो पार्ट डेफिनेटली आई विल टेक यू थ्रू. या that is one thing. And good part about our session today is we will have a continuation of this on 18th. So my request to all of you is whatever we will be covering, please read it. आपका जो वर्कबुक है, वर्कबुक में से आप प्लीज रीड करना उतना चैप्टर्स, and let me know if you have any doubt so that we can revisit it on when we are meeting on 18th. Yeah. So the weightage is, if you see, सबसे ज्यादा weightage is for investor service and mutual funds scheme selection, which is of 15 marks. Now, having said this, जो first chapter है, जो 8 marks का है, this is the most easiest of all. मतलब आपको एक basic understanding भी है investment के बारे में, तो आप इसको clear करेंगे, and this is very important chapter. Second chapter जो है, concept and role of mutual fund. तो इसमें म्यूचुअल फंड का कौन कौन से टाइप ऑफ फंड्स आते हैं, दैट इज है. एंड दो द वेटेज इज 6 मार्क्स, अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया, देन इट इज लाइक आपको बाकी कुछ भी नहीं समझ में आएगा, राइट? अगर आपको सेकंड चैप्टर समझ में आया तो ही आप 12th सब चैप्टर अच्छे से कवर कर पाओगे. या रादर 12th ही नहीं, सारा कुछ. सो व्हाट आई विल डू टुडे इज वी विल कवर chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 12, है ना? तो this way we will go because chapter number 2 and 12 is very much linked. अगर आपको chapter number 2 अच्छे से समझ में आया तो 12 आराम से क्लियर हो जाएगा. Okay, so that is one thing. Then comes the legal structure. इसमें बहुत कुछ नहीं है पढ़ने को, बट लीगल स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है, जिसमें आपको ये पूछा जाता है कि who appoints whom and all those things. Okay, वो होगा. Then scheme related information. So scheme related information एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप अगर रट्टा करने जाओगे तो प्लीज बेयर विथ मी, आई हैव अ वेरी बैड कोल्ड. सो स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो ये है, इट इज ऑफ 3 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, एंड ये आप रट्टा नहीं कर पाओगे बिकॉज इट इज वेरी कंफ्यूजिंग. सो आई विल गिव यू सम इजी वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट. आप वो लॉजिक समझ लीजिए, वो लॉजिक के हिसाब से अगर आप आंसर करने जाओगे, यू विल बी एबल टू क्लियर दिस, गेट दिस 10 marks also, right? Then coming to investor service, again this is mostly theoretical in nature. We'll have to read it couple of times, है ना? That there are few questions which comes on ratios. So sharp ratio कैसे calculate करेंगे, tenures और beta, उसके ऊपर एक थोड़ा है, that we will cover, but all this will come in the next session, that is on 18th. Yeah, that's how the flow will be. We won't be able to cover the entire chapter per se because ये जो unit 7 है, 6 है, these are fully and fully theoretical one, which you will have to read it. Whatever can be explained, we will be definitely covering that. Yeah. So I hope this is clear. Any confusion, please feel free to ask. I hope my screen is visible. Yes, it is. Yeah. So this exam is like a multiple choice question, 1 mark each, 100 questions will be there. You will be given 2 hours to clear this exam, and 50% is a passing, and best part is there is no negative marking for this. So when I say negative marking नहीं है, मतलब आपको सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, right? Don't leave any answers.
Okay. What we have generally observed of late is क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा लंबा देते हैं. ओके. तो आपको क्वेश्चन को 2 बार एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा. ओके. तो आपको लैंग्वेज जो है वो समझना जरूरी है. राइट. आपको शायद आंसर भी मालूम होगा बट वो जो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज सो ट्विस्टेड एंड टर्न तो उसको समझने के लिए एटलीस्ट 2 बार आपको रीड करना होगा क्वेश्चन. आराम से आपके 2 घंटे है. यू हैव 2 आवर्स. काफी टाइम है आपको ये सॉल्व करने के लिए. ओके. दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम इज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Anywhere, I just want to ask, they cannot unmute and talk, no? They can only put in the chat box, right? Yeah, they can put in the chat box. Yeah. If you So, want me to unmute anyone, I can, I guess, do that. okay, no But they can problem. put So, their अगर answers in किसी को chat भी कुछ box. डाउट है तो I just request that आप लोग please chat box में डालिए. So, I will also come to know what is happening, how you are understanding. Okay. Uh, so friends, I put the PPT in front of you. So this PPT is huge PPT. Almost 500 slides are there in this. So we will not take you through all the slides. Okay. जो मेन ये चैप्टर में से आने वाला है दैट इज व्हाट वी विल कवर बिकॉज पूरा एक साथ अगर करने जाएंगे तो वी विल नॉट फिनिश इट इवन. आई डोंट नो हाउ मेनी क्लास वी विल हैव टू टेक. है ना. सो वन इज on financial goals. इस पे एक क्वेश्चन आता है. So financial goals, when we say the one which is related to finance. So anything where money is involved, that is financial goal. So if I say I want to become rich, okay, this is a goal, but then this is not a proper financial goal. So when a goal has to be financial, so it has to have some numbers and time frame associated to it. Yeah. So I want to earn, let's say I want to accumulate 1 CR by 2028. So when I say this, there is a time frame given, there is a amount given, right? And it is possible. है ना. तो ये सारा चीज देखना जरूरी है. Right. So there will be one question that comes. They will give you few goals, okay, and they will ask which among this is not a financial goal. Okay. सो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ ये ऑलमोस्ट फाइनेंशियल गोल है तो बट आपको थोड़ा ध्यान से रखना है. अगर मैं बोलूँ कि मुझे फाइनेंशियली रिच होना है दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल गोल. इट हैज टू बी a smart goal. So when I say smart goal, it has to be specific, measurable, attainable, relevant and timely. Specific means उसको numbers clearly होना चाहिए. I want to buy a car costing 10 of costing 20 lakh by 2028. So here it is specific. I want to buy a car. So अगर इसको और अच्छे से डिफाइन करो कि कार का मॉडल क्या है एंड ऑल दैट इज मोर गुड. इट इज मेजरेबल. मेजरेबल मीन्स अमाउंट क्या है वो मेजर कर सकते हैं. इज इट अटेनेबल वो भी देखना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई वांट टू बाय Lamborghini by 2028, so it is fairly not achievable for me with the income that I have, right? So it is not attainable one. Whether it is relevant or not, that is also very important, and the timeline also should be given. So it should not be like in the air, whatever time frame whenever I can achieve. No, the time frame has to be given. तो जो भी गोल्स आपको एग्जाम में दिया जाएगा आपको उसमें देखना है कि ये स्मार्ट गोल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं. ओके. वन इज दैट. सेकेंड इज वन क्वेश्चन विच आई ऑफ लेट सॉ इन द एग्जाम इज ये जो स्मार्ट गोल का जो टर्मिनोलॉजीज मतलब एस मीन स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अटेनेबल, आर मीन्स रेलेवेंट, टी मीन्स टाइमली, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था. ओके. सो दे विल आस्क इन द स्मार्ट गोल व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर. ओके. तो अभी आप मुझे बताओगे कि अरे ये तो बहुत इजी है. ओके. बट व्हाट हैपन इज आप उधर बैठ के आप सोचोगे आपके दिमाग में ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं आएगा. हो सकता है आप कोई और वर्ड रेलेवेंट के बदले में कुछ और रियलिस्टिक बोलो. तो रियलिस्टिक इज डिफरेंट एंड रेलेवेंट इज डिफरेंट. तो आपको ये याद रखना है. आई होप यू ऑल गॉट इट.
This is a hurdle with online session. I do not come to know whether you're understanding or not. So, कोई भी अगर आपको doubt है, तो please put in the chat box. So, I'll get a sense how much you are understanding. Yeah. So, ये एक आपको याद रखना है. Okay. फिर then there are questions that will come on short term, medium term, and long term goals. Okay. So, what is short term, medium term, and long term? So, basically, one which are very urgent or uh, within this time frame of 6 months to 1 year, that comes under short term. So short term can be your emergency fund. It can be paying your child's school fees. These are all short term goals that are there. है ना? तो इसको आपको immediate fulfill करना होता है. Then comes the next one, which is called medium term. Medium term means it is from anywhere from the period 1 to 3 years to 5 years, right? So this comes under medium term, right? So medium term may it could be paying your child's graduation fee. It could be paying a deposit for your house. It could be anything, right? Buying a second car, or maybe buying a car for you, right? Then comes long term goal. Long term goal is for a longer period. Anywhere from 5 years to 7 years and above is considered as long term goals. So there are questions that comes on this as well. Yeah. Understanding this terminology is important because इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा फंड किसको कब देना है. Whether it is a long term, short term, or a medium term goal, that is understood, right? Then there will be a question on inflation and investing. Okay. So usually ये एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत कम आता है. So questions that come in calculation is one is on inflation, another is on the ratios that we just discussed, है ना? That is the Sharpe ratio, beta calculation. Very minutely, sometimes only that comes. अगर थोड़ा सा टफर पेपर है तो वो आता है, अदरवाइज इतना कैलकुलेशन ये एग्जाम में नहीं आता. इन्फ्लेशन का बहुत ही सिंपल है. सो व्हाट दे विल गिव यू इज, we all know what is inflation. Inflation is nothing but महंगाई, right? How the price increases over period of time because of the inflation is what we are going to determine over here. तो अगर मैं बोलूं कि I want to buy a car after 5 years which is worth 10 lakh, right? तो उसका जो कार का वैल्यू है 10 lakh वो आज के हिसाब से है. After 5 years, the value of that car is not going to be 10 lakh, it is going to be more than that. Yeah, that is what inflation which we need to take into consideration. Now, why this is important is usually when client comes to us, so when we ask them, so what are your goals? So let's say they say, I want to buy a house. And what is there in their mind for a house is, what is the cost of the house now? Let's say the cost of the house is 1 CR. After 3 years, the cost will definitely increase because of inflation. This is where you need to tell them about this concept of inflation. Okay. So I'm just sharing in Excel with you to show the calculation. So in exam, what will happen is they will give you a goal, and let's say the goal cost is 10 lakh. Okay. And they will give you, this is a cost today. And they will give you inflation number. Let's say inflation is 6%. Then they will ask you after 5 years, if they want to achieve the goal of, let's say they want to buy a car worth 10 lakh, okay, and the inflation is 6%, what will be the value of car after 5 years? This is a typical question that comes in inflation. Okay. Now the goal can be car, house, whatever you want to name it. Okay. So this formula is simple. You just need to do future value. You will be given Excel. You can use Excel in exam. Okay. You can even use calculator, but I would always suggest use Excel because that is more easier. So the rate is given n per, which is the number of year, right? This is 0. The value of your car today is given, right?
and you have to find out what is the value of it after. So ये minus sign देके कुछ आप tension मतलब it is one and the same thing. So this is how you will find what is the value of the car after 5 years. So मैं आपको ये formula इधर लिख के बताती हूँ. तो आपको equal to FV डालना है, future value, okay? तो equal to future डाल के ऐसे bracket open होगा. यहाँ पे आपको rate click करना है. फिर n per, which is called the number of years, okay? Then you will have something called PMT. ये आपको लिखना नहीं है, इसको जीरो डालना है. PMT, उसके बाद PV, PV जिसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? और टाइप करके एक ऑप्शन दिया रहेगा, ये आपको लिखना है. दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज. तो इसमें आप वैल्यू कैसे डालोगे? सो आई एम जस्ट पुटिंग इट फॉर यू. FV डाल के रेट में आप डालोगे 6%, परसेंटेज साइन डालना बहुत जरूरी है. 5 years, PMT को आप जीरो डालोगे. PV को आप जो भी आपका गोल का आज का वैल्यू है, सो इट इज लेट्स से 10 लाख, 10 1 2 1 2 3, राइट? एंड टाइप 0 या 1 आप लिख सकते हो. सो दिस इज हाउ इट विल बी. एनी डाउट एनीवन, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड, व्हाटएवर इट इज. I hope chat box is understood. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I was not seeing the chat box. I'm so sorry. I just saw the. I don't know why. Normally, chat box, if any message comes, that number comes over there. Oh, I'm so sorry. Don't go for the full form of PMT. It is not important. What PMT simply means, if there is a monthly calculation there, that is where the PMT will be used. Please show actual calculation with formula. Sir, formula is there in the sheet in your workbook, so you can use that formula itself. But having said this, this is the one that you will use for exam, because what happens in formula is you tend to forget the formula. Okay, so that's why I have shown this over here. Yeah. Anyway, coming to saving and investment, there will be one question on saving and investment. Yeah. Uh, Very, very simple. Saving means simply that anything that we keep aside from spending is called saving. So where you keep it is irrelevant. अगर आप पिगी बैग में भी डालोगे, कपड़े के बीच में भी रखोगे, these are all saving, right? वो saving को अगर आप कुछ products, what are the factors that we need to evaluate when we are doing an investment? So majorly, अगर आप खुद के ही पोर्टफोलियो को खुद भी अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहोगे, so there are few things that we take into consideration. One is the safety aspect, liquidity aspect, convenience, and post tax return. कितना आपको रिटर्न मिलेगा. This is also very important to understand कि आप सही जगह पे डाल रहे हो कि नहीं, right? This usually comes in your uh, which among the following options are most relevant when it comes to uh, putting your investment. So these are the general question that comes over here. So मैंने अभी आपको बहुत short इसमें बताया, question थोड़ा लंबा रहता है, okay? And you need to click on all the three. Then comes what are the different asset classes that are there in investments, okay? ये बहुत ही सिंपल है, yet इस पे से कम 3-4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, okay? So let's deep dive into various investment avenues that are there. The first one being real estate, one of the oldest और इंडिया के लिए सबसे मोस्ट रेलेवेंट. अगर अब किसी को शादी भी करना हो तो पहले सबसे पहले पहले पूछते घर है कि नहीं, राइट? सो what is the difference between saving and investment? So when we say saving, it is just that you are not spending the money. You are keeping that money aside for not spending. So this is subject to a risk of inflation, right? And money not growing, right? When you park it into any investment avenues, when you park it into any of the asset class, then that is where it is put to use, right? So वहां पे आपको रिटर्न मिलेगा. यहाँ पे आपको रिस्क ये रहता है कि सेविंग में आपको सिर्फ आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, और हालांकि सिर्फ आपका पैसा इन्फ्लेशन की वजह से कम होता जाएगा.
देन कम्स व्हाट आर द डिफरेंट एसेट क्लासेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आता है एंड वेरी वेरी इजी येट लिटिल कंफ्यूजिंग. तो आपको लगेगा अरे ये आंसर भी राइट है, ये आंसर भी राइट है. ओके, so let me explain this. So this is real estate is one of the most important and one of the most popular among all the asset class, right? And ये काफी इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाएगा तो बहुत ही ज्यादा हम इसको प्रोमिनेंस देते हैं, राइट? अगर आप किसी को शादी भी करना है, पहले ये पूछते हैं कि घर है कि नहीं, राइट? तो इसका जो फीचर है, दैट इज देयर इज रियल रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, there is land, there is commercial real estate, right? So ये पूरा categories, different categories are there. Now when we think about real estate, what we need to understand is ये जो फीचर्स मैं यहाँ पे लिख के मतलब आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मेरे घर, अगर सपोज मेरे पास प्रॉपर्टी है एंड लेट्स से द प्रॉपर्टी इज इन far ahead of पनवेल एंड ऑल, देन प्रोबेबली उसका वैल्यू कम रहेगा. बट अगर सपोज लेट्स से मेरा घर शाहरुख खान के घर के बाजू में है, तो ऑफकोर्स उसका जो वैल्यू है बहुत ही ज्यादा होगा, राइट? एंड रियल एस्टेट इज illiquid in nature. So when we say illiquid, we all know what is illiquid. Means if I want to sell it, I cannot sell it immediately. Depending on where the location is, what the price of that location is, accordingly only I will be able to sell it. और उसमें भी ये होता है कि पता नहीं एक दिन में तो नहीं होगा, कम से कम एक महीना ही पूरा लगेगा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के, राइट? एंड इट इज नॉन डिविजिबल एसेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट नॉन डिविजिबल मीन्स, अगर सपोज मेरे पास एक 3 BHK है, तो मैं उसका एक 1 BHK को सेल नहीं कर सकती, राइट? सो दीज आर ऑल द फीचर्स दैट आर देयर. ओके, अभी वी कैन इन्वेस्ट इन फिजिकल रियल एस्टेट ऑल्सो एंड वी कैन इन्वेस्ट इन फिनेंशियल फॉर्म ऑल्सो, या. सो इसमें आपको दो चीज मिलेगा. एक है कैपिटल अप्रिसिएशन, उसका प्राइस बढ़ेगा तो कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा, और ऑन अ रेगुलर बेसिस यू गेट रेंट ऑल्सो. सो वन ऑफ द क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम इज, एक तो आपको पूरा फीचर्स दिया जाएगा और पूछेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रियल एस्टेट, है ना? या पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ रियल एस्टेट, या फिर कुछ फीचर्स दिया जाएगा और पूछेगा कि इसमें से कौन से एसेट क्लासेस ये कैटेगरी दिखाता है. ओके, so it can be real estate, it can be gold and things like that. One of the question which I saw recently was, which among the following asset can be used for self consumption and regular income, or regular income. Okay, self consumption means मेरे खुद के कंजम्पशन के लिए. So when I say खुद की कंजम्पशन के लिए, I can buy real estate and I would be staying in that property, right? So that was called self consumption. Yeah, there is and it is slightly higher in terms of the expenses, like brokerage fees is high, stamp duty is high. So these all things are there in the real estate. Yeah, so these are the financial assets wherein the investment can be done. You just need to know this. Exam में मैंने आज तक इसके ऊपर questions देखा नहीं है, so we can skip this. Commodities, again, it is used for consumption and for trading as well, right? Disadvantage of commodity is that it is perishable, means wood खराब होने का chances है. And second is, you need a space for that. You need a storage space for that. इसके related questions exam में आता है. Please remember and be mindful कि क्या questions रहेगा. Okay, so this can be in a leverage contract also. So when I say leverage contract means आप गोल्ड का फीचर्स ले सकते हो, सिल्वर का फीचर्स ले सकते हो, राइट? सो इसमें आप लिवरेज लेके ले सकते हो, राइट? तो ये एक पोर्शन जो है ये कमोडिटीज को थोड़ा रिस्की बना देते हैं. ओके,
एंड इसके रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इट कैन कम इन एग्जाम। यहाँ पे भी आपको कैपिटल अप्रिसिएशन इज अ मेजर थिंग दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस। देयर इज नो वे इन विच यू कैन गेट you can you can get regular income from commodities. So regular income में आपको आएगा equity, you will get you will get properties or real estate. So all those asset class will come for regular income. Commodities में it is only for capital appreciation. Yeah. So that is something that you need to remember from exam point of view. And most widely and accepted currency is that of gold and silver. That's it from this commodity. Then comes fixed income. Fixed income में आपको एक दो क्वेश्चन आएगा. I'll tell you what it is. So what is fixed income? So let's understand that. It is fixed income means, let's say I borrow money from you. Okay. So when I'm borrowing money from you, one, you will expect me to give you something in return. Free में तो आप दोगे नहीं, right? I will have to pay you interest for it. And that interest is paid on a regular basis. It can be monthly, it can be quarterly. Yeah. So here in this case, there are regular income in this asset class. Now, if you have to give me money, will you give me just like that? No. You will see whether I can pay you back that interest, whether I can pay you back that principal back is what you will take into consideration when you are giving me that money, right? तो आप मुझे लोन देने से पहले आप क्या चेक करोगे कि मेरा सिबिल स्कोर कितना है, करेक्ट? सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप मुझसे कम इंटरेस्ट ही लोगे, राइट? अगर मेरा सिबिल स्कोर खराब है तो आप मेरे से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करोगे, करेक्ट? तो सिमिलर थिंग्स हैपन इन मार्केट ऑल्सो. अब हम जो लोन, जो हम और आप नहीं, we will take little bigger players. So we will say, let's say government of India, state government, companies, इनको भी पैसे की requirement होते हैं. That is when they issue papers, issue these bonds and debentures and things like that. So when they issue, that is called bonds and debentures. उसके अगेंस्ट वो आपको इंटरेस्ट पे करता है, करेक्ट? अब ये कंपनीज कितना सेफ है ये जानने के लिए आप चेक करोगे इनका क्रेडिट रेटिंग. So these credit rating is given by CARE, ICRA, CRISIL. Okay. So they will say whether this is safe or not, and accordingly you will come to know how much is the interest. अगर बहुत ही safe है instrument, then what will happen? The interest rate will be relatively low. And if it is slightly risky in nature, that asset class, that company, then the interest rate will be slightly higher. So how do you know what is the credit rating? ये जो CARE, ICRA, CRISIL ये लोग हैं, they give a rating. So rating, the best is AAA, AA plus, double A, then BB plus. ऐसे इनका rating दिया जाता है. इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. सो आई थिंक देयर इज वन स्लाइड टुवर्ड्स द एंड ऑन दिस रेटिंग. आई विल शो यू देयर. तो इसमें आपको ये लास्ट एक एग्जाम में मैंने ये चेक किया था, तो वेर इन दे सेड कि अगर ये डबल है, ये है, तो इज इट सेफ, नॉट सेफ, how risky it is. So related to that, so they will give you various rating and they will say which among the following is the safest, or they will say give you various category and they say is this safe compared to the other rating. I hope you got it what I'm saying. इस तरीके का क्वेश्चंस आता है एग्जाम में. Okay, so these are the different fixed income avenues that are there, which is there on the screen. फिक्स्ड इनकम में आपको ये पूछा जाएगा कंपेयर टू इक्विटी मार्केट, हियर द रिस्क इज रिलेटिवली लेसर. व्हाई? बिकॉज कल उठ के ट्रम्प ने कुछ बोल दिया तो आर इक्विटी मार्केट विल कीप गोइंग अप एंड डाउन, करेक्ट? इट इज सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन फॉर based on various news and results and various factors. But fixed income में क्या होता है, ये सब नहीं है. तो your interest rate is fixed.
whether the market goes up or down, whatever the interest rate is there, that is fixed based on what you have agreed upon, है ना, वो change नहीं होगा. So there would be a question compared to that of a equity, how it is. Yeah. Then coming to equity, we all know what is equity. Equity is nothing but honest capital in the business. Basically, आप कोई shares ले रहे हो, right? When you're taking shares, you are taking a part ownership in the business. So in that sense, this is a risk capital, since owners earning from business is linked to what is the future of that company, or what is the risk in that business. Here I wanted to say two things. When a company is first getting listed, it is in the primary market, which is called IPO. I'm sure you all know this. Once it's get listed, it is there in the secondary market, where the price goes up and down based on various factors. यहाँ पे आपको दो चीज मिलता है. एक कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है, मतलब शेयर का प्राइस बढ़ गया, लेट्स से 100 था, 100 से 120 हो गया, तो इसको बोलेंगे हम कैपिटल अप्रिसिएशन. दूसरा है when the company is earning profit, it gives dividend to the shareholders. So this is again an asset class wherein there are chances of you getting regular income. Okay, you get capital appreciation and you may get regular income also. Okay, इसमें मैंने एक question recently देखा था, wherein what they have said is, I want you all to write the answer in the chat box. Okay, so there are two manufacturing firms, both are earning profit. Company A has declared dividend, company B has not declared dividend. Is it allowed, or both the company has to give dividend? है ना, कंपनी दोनों का भी प्रॉफिट है, एक ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, एक ने डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया. कैन दैट बी पॉसिबल इज व्हाट इज अ क्वेश्चन दैट वाज देयर. तो ऑफ कोर्स मैं बहुत क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, एग्जाम में काफी डिटेल्ड दिया गया. सो आई वांट यू ऑल टू टेल मी, इज इट ओके इफ a company is generating profit and yet it is not giving dividend? Possible? Yes. Allowed. Correct. So what the company will do, they will use it for their further expansion. You know? So this was one of the question that was there in this. And यहाँ पे capital appreciation और dividend के ऊपर, regular income के ऊपर भी questions दिया जाता है. That is again something that you need to remember. Yeah. So in an investment, there can be few risks. One is that of the inflation risk. Inflation risk means कि inflation का बढ़ने से what is the risk in that company is what the inflation risk will tell you, right? So whether the price of that commodity gets deteriorated or not is what the inflation risk will tell you. इसपे if I recall correctly, there is something called real rate of return. So आपको जो भी profit आता है उसपे let's say you have invested in so let's say you have got a profit of you have invested in some equity or anything and you have got a return of let's say 20%. Okay, तो आपका जो रिटर्न है वो एक्चुअली में 20% नहीं रहा, तो आपको इस पे इन्फ्लेशन को you have to take into consideration the inflation also, right? So let's say inflation is 5%. Okay, so the formula for real rate of return is 1 plus R, that is your rate of return, divided by 1 minus 1 plus I minus 1. I'll just put it in Excel and show you. Real rate of return. Okay, तो इसका फॉर्मूला है 1 plus R divided by 1 plus I means inflation, okay, minus 1. तो अगर let's say आपका जो रिटर्न है is let's say 8%, okay, और आपका जो इन्फ्लेशन है let's say it is 5%. आपको एग्जाम में पूछेगा what is the real rate of
रिटर्न। तो आप क्या करोगे, 1.08 डिवाइडेड बाय 1.05 minus 1. So this is your real rate of return that you get, right? ये आपका real rate of return है. Everybody understood with me? Any doubt? Please tell me. आपको फॉर्मूला याद रखना है, 1 plus r divided by 1 plus I, which is inflation, minus 1. Please don't forget to put minus 1. आपको एग्जाम में ये आंसर 1 plus r divided by 1 plus I का भी उधर आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा. So don't just jump and mark it, right? आपको ये ध्यान रखना है, -1 भी करना बहुत जरूरी है. Yeah, I hope it is clear. If a quick okay in the chat box would be helpful. Why it is not 3%? सर मैंने उसको एक्सपैंड किया मतलब वो डेसिमल को कंसिडर किया. Yeah, it is not 8 minus 5. The formula is this, 1 plus r divided by 1 plus I minus 1. So this is what is the inflation risk. इस पे ये क्वेश्चन आता है. इस पे दूसरा क्वेश्चन ये आता है. ये बेसिकली सारा मैं रिस्क बताने के बाद बताती हूँ. Another is liquidity risk. Liquidity risk is simple. If you want money, if you want to sell that particular asset class, right? आप कितना जल्दी उसको सेल करके पैसा ले सकते हो, that is what the liquidity risk is. Investment in fixed income asset is usually considered less risky than equity. Now, even within that fixed income also, the government securities are considered as the safest because very less likely chances that government will default, right? Now again, the investment must be held till maturity. If one needs liquidity, there could be some charges, and an option may also not be available in case of a fixed income also, right? But अगर आपके पास let's say mutual fund है या आपके पास let's say equity है, तो probably आप ऐसे सेशन में बैठे बैठे अगर मार्केट चालू होता तो आप इक्विटी में अगर आप सेल ऑर्डर डाल सकते थे, है ना? और म्यूचुअल फंड का भी यही सेम, विद just one click of a button it can be sold for you, right? Then comes next is the credit risk and the market risk. Yeah, so first let me explain credit risk. Credit risk means what is a risk that the borrower will not pay. तो अगर आपने कोई बॉन्ड लिया है, तो लेट्स से वो कोई कंपनी का है या गवर्नमेंट का है, या फॉर एग्जांपल फॉरगेट ऑल दोस बॉन्ड्स, अगर आपने मुझे लोन दिया है, ओके, तो व्हाट आर द चांसेस दैट आई विल पे यू बैक इज व्हाट द क्रेडिट रिस्क विल टेल यू. या, सो देयर इज टू रिस्क इन दिस. वन, मैं आपको इंटरेस्ट ही ना दूं, या दूसरा है कि मैं आपको प्रिंसिपल ही ना दूं, या हो सकता है मैं आपको दोनों ना दूं, राइट? तो आप मेरा हटा के आप उसको कंपनी में डाल दीजिए. So you have an option. One, there is a bond by Adani, and there is another one bond by, let's say, SBI. Which is the most safest? The SBI one is most safest. Okay, nothing against Adani, but just giving you the perspective of how it looks like. You know? So again, here for that we will take into consideration the credit rating of these bonds. Next is that of market risk. So when we say market risk, how fluctuating it is with respect to the market price. When securities are traded in the market, people can buy and sell the same based on their opinion. है ना? अगर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अगर अच्छा चलेगा तो I can buy. If I feel the stock will not do well, I will sell. Right? यही सेम होता है हमारे मार्केट में. Right? So there are two type of risk a security will hold. One is a market risk, another is a price risk. Okay. When there is a possibility of a, for example, जिसे like a war like situation है, right? So economy will be affected. या for example COVID हुआ था, right? So across the stock across the company sectors there was a fall, right? So there is a market risk that are there, right? So
Market risk and price risk is something that you need to remember. Then comes the interest rate risk. Because of interest rate fluctuation, when there is a change in price, that is what it is meant by interest rate risk. Yeah. So this usually affect the value of the bonds and debt instrument more directly than the stock. Stock को आपको stock में ज्यादा फर्क दिखेगा नहीं, जबकि bonds और debt instrument में इधर ज्यादा आपको interest rate की वजह से fluctuation दिखेगा. Right? Again, bonds में भी आपको ये देखना होगा कि इसका maturity कभी है. राइट. सो मैच्योरिटी कभी है मतलब, लेट्स से मैंने आपसे लोन लिया है, मैं आपको बोल रही हूँ कि बॉस मुझे 10 लाख देना एक दिन के लिए, और दूसरा ऑप्शन मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज मुझे 10 लाख देना 1 ईयर के लिए. इसमें रिस्की कौन सा है? 1 ईयर वाला, बिकॉज मैं भाग सकती हूँ. राइट. 1 ईयर में मेरा कम चांसेस है भागने का. राइट. तो सिमिलरली बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में जो जल्दी मैच्योर होता है उसमें इंटरेस्ट रेट का रिस्क बहुत कम होता है. राइट. जब ज्यादा टेन्योर रहता है तो देयर आर हाई चांसेस दैट प्राइस कैन मूव अप एंड डाउन बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट. नाउ इन bonds, the relationship between the interest rate and the bond price is inverse in nature. Right. When the interest rate in the economy increase, what will happen? The bond का जो price है that will decrease. Okay, ये exam में आता है. Please remember, when the interest rate rises in the economy, the bond price of the existing bond will decrease. है ना? And it's very simple. Like अगर मैं आपसे लोन लूं, है ना, और मैं आपको बोल रही हूँ चलो मुझे 6% में हमने एग्री किया. ओके. अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 8%. राइट. मैं तो आपको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रही हूँ, बट मार्केट में आपको, अगर आप मेरे से एग्जिट करके और किसी और को देगा तो आपको 8% मिलेगा. राइट. तो मेरा जो हमने जो एग्री किया था वो बॉन्ड, उसका वैल्यू गिरेगा, बिकॉज और कोई अगर खरीदना चाहोगे उसको 6% में मिलने वाला. राइट. सो उसका वैल्यू कम हो जाएगा. प्लीज रिमेंबर, the relationship between the interest rate and the bond price is inverse. It simply means that when the interest rate increases, the bond price will decrease. Yeah. So this is very important from an exam point of view. Exam में आता है. And also stocks ज्यादा affect नहीं करता है on interest rate movement. Another is, this is very simple, yet it comes in exam. When it comes to risk, you can avoid taking a risk, or you can take a risk to benefit from a particular event, right? Or you can diversify your risk. Yeah? So these options are available. I hope whatever we covered till now is clear. Coming to the behavioral biases, very, very, very important. Okay. So when I say behavioral biases, देखिए, if you have to ask me when you have to buy a share, you will have to buy a share when the market is down. When you will sell a share, when the market is up. ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, राइट. लेकिन फिर भी हम ये लॉजिक को समझ नहीं पाते. What is the reason behind it? The reason is simply based on our emotion and the biases that we have. तो जो fear और greed जो है, उसके basis पे ये emotions या biases चलता है. So these biases are very very important. एग्जाम में ये आएगा ही आएगा. इस एग्जाम में कैसा आएगा वो भी मैं बताती हूँ. आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा और वो पूछेंगे कि which is a biases that is displayed over here. The person is displaying which biases. Okay. What I have observed is, आपको दो बायसेस एकदम सेम सेम लगेगा. आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई ये बायस है कि ये बायस है. ओके. तो आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है. सो एटलीस्ट 3 to 4 marks will come on the biases. So let me explain it to you. First one is availability heuristic. Availability heuristic मतलब मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस पर मैं जो डिसीजन ले रही हूँ, दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक.
मैं बाकी ऑप्शंस को देख रही हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल्स इस तरीके का देती हूँ ताकि आपको याद रहे. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सो आई एम स्टेइंग इन नवी मुंबई. सो लेट्स से मेरे मॉम मेरे लिए लड़के का रिश्ता लेके. ओके. तो मम्मी ने क्या किया, जो मेरे नवी मुंबई में ही जो रहता है उनका फोटोज ला के दिया. तो उसी में से मैं एक लड़के को सेलेक्ट कर रही हूँ, राइट, एंड मैं शादी कर रही हूँ. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट रिलाइंग ऑन वॉट एवर इंफॉर्मेशन आई एम करेंटली हैविंग. हालांकि अगर मैं बांद्रा तक चली गई होती तो मुझे बहुत अच्छा प्रपोजल मिल गया होता, राइट. बट आई एम नॉट डूइंग दैट. वॉट एवर इज अवेलेबल विथ मी उसी से मैं डिसीजन ले रही हूँ. दैट इज नथिंग बट availability heuristic. Second is confirmation biases. Confirmation biases is simple that मैंने एक व्यू बना लिया अपने आप के लिए. So for whatever reason I like a particular sector or a stock or things like that. And what I'm doing is I'm just looking for information that will tell me yes, my view is right. So let's say you are of a view that market will go down. तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ उसी तरीके का न्यूज ढूंढने की कोशिश करते हो जिसमें आपको पता चलेगा इकोनॉमी इज डूइंग दैट, रिसेशन इज गोइंग टू कम, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा ऐसा हो गया. तो इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायसेस. बायसेस. तो आप सिर्फ ये सुनना चाहते हो कि हाँ मैंने जो डिसीजन लिया है वो करेक्ट है. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. फेमिलैरिटी बायसेस बहुत ही सिंपल है. जो मुझे पता है उसी में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ. So lot of clients display this. So particularly those who are working in IT segment. Okay, so they tend to invest into only IT stocks because they understand only IT stocks. That's the reason they invest only into IT counter, right? Or somebody who is working in banks, they want to invest only into the banking stocks. So that comes under familiarity. Third mentality, everybody is doing, so I also want to do. That is nothing but herd mentality. My friend is buying one particular stock, so I will also buy. That is nothing but herd mentality. Loss aversion. बॉस मुझे प्रॉफिट नहीं मिला तो भी चलेगा बट मुझे नुकसान नहीं चाहिए. सो दैट इज लॉस अवर्शन. तो इसके लिए दिस इज वेरी प्रोमिनेंट इन आवर कंट्री. दैट इज व्हाई अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड का एयूएम कितना है, ऑलमोस्ट 79 लाख करोड़. बट अगर बैंक एफडी का एयूएम देखोगे इट इज अबाउट 217 लाख करोड़. अभी धोनी जी, सचिन जी सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, yet people tend to keep their money into bank FDs. Yeah, so they are simply showing you a loss aversion biases. Overconfidence. This is one of the biases which we have been recently seeing. Right, people think that they are able to do like post COVID. अगर आप देखोगे मार्केट हमेशा ही ऊपर ही रहा एक्सेप्ट द रीसेंट फॉल, है ना. तो लोगों को लगता है कि हाँ उनको मार्केट समझ में आ गया, उनको लगता है कि हाँ इक्विटी ही अच्छा करेगा, राइट. एंड देन दे टेंड टू टेक पोजीशन विदाउट थिंकिंग द कॉन्सिक्वेंस. वो लोग ये नहीं देखते हैं कि इसमें क्या रिस्क है, वेदर उनके लिए ये कैपेसिटी है कि नहीं ये रिस्क लेने को. दैट इज व्हाट इज ओवर कॉन्फिडेंस बायसेस, राइट. देन कम्स रीसेंसी बायसेस. तो रीसेंसी बायसेस इज नथिंग बट हाल ही में जो हुआ वही वो लोग सोचते हैं एंड उसके बेसिस पे जो डिसीजन लेता है, दैट इज recency biases. Okay, it could be a negative experience, it could be a positive experience. So investor, what they do is they tend to extrapolate the event into the future and expect a repeat, right. For example, somebody lost money in market once, they feel कि boss मेरे से पैसा कम, I will always lose money in market, right. So this is risky for me. Equity is risky for me. This is a recency biases that a person is displaying, right. So this is what is on biases. So for all this, we need to do a risk appetite or risk profiling of a client. Now, to do a risk profiling of a client, you need to see their risk appetite.
रिस्क एपेटाइट देखने के लिए आपको देखना होगा उनका नीड क्या है, एबिलिटी क्या है और विलिंगनेस क्या है। नीड मीन्स उनको वो रिस्क लेने की जरूरत है क्या। सेकंड, एबिलिटी है क्या, उनके पास इतना कैपेसिटी है ये लेने के लिए। थर्ड इज विलिंगनेस, मेरे पास नीड भी होगा, विलिंग एबिलिटी भी होगा, बट मैं खुद चाहती हूँ क्या, दैट इज व्हाट द विलिंगनेस विल डू। क्या, उस हिसाब से आप एसेट एलोकेशन करोगे। एसेट एलोकेशन इज सिंपली मींस आप वेरियस इंस्ट्रूमेंट में पैसा पार्क करोगे, जिससे आपको आपका जो अमाउंट है, what it will be invested into various asset classes, so that if one asset class doesn't move up also, others will be there to protect you or take care of it. एसेट क्लासेस को, एसेट एलोकेशन को समझने के लिए देयर आर टू टाइप ऑफ एसेट एलोकेशन. One is the strategic asset allocation, another is the tactical asset allocation. Strategic asset allocation means, let's say मैं एक पर्सन के साथ बैठ रही हूँ, मैं उनका फाइनेंशियल गोल समझती हूँ, उनका घर में जो भी सिचुएशन है वो पूछती हूँ, उनका एज समझती हूँ एंड उसका एस्पिरेशन समझते हैं. Based on that, we plan something for that person. That is nothing but a strategic asset allocation. So, for example, let's say मैंने एक strategic asset allocation किया. मैंने let's say चैताली का ही strategic asset allocation किया. So, what we do is we put 50% in equity, we put 20% in debt, we put 20% in commodities, and we put 10% in cash or liquid asset. तो हमने किया 50, 20, 20 and 10. So this is our strategic asset allocation that we did based on her needs and requirement. What based on her risk appetite, हमने ये strategic asset allocation किया. Now, let's say if so, there are few things in this strategic asset allocation में. Let's say हमने equity में 50 डाला था, and let's say market बहुत अच्छा चला गया, and ये जो 50% है उसका allocation बढ़ गया because of the profit. Okay, तो हमने डाला था let's say 50,000, 20,000, 20,000 and 10,000. तो 50,000 बन गया almost 70,000. So our percentage change. So we will have to rebalance it. Yeah, rebalance करना जरूरी है. So how we will rebalance it? So how we will rebalance it? Can anyone please put in the chat box? Whatever is the new allocation, if we want to rebalance it, how she will do when her equity portion has increased from 50 to, correct. Thank you, Manish. I just want to check everybody is there or not. Okay, and increase debt. Okay. What about others? This is a negative part about online session कि मुझे समझ में नहीं आता कि सब है कि नहीं है, सब सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो, है ना. तो please keep putting your answers in the chat box so I'll also get a feel that I'm not talking to the laptop. Yeah. Thank you so much. So this question was there in exam. Okay, so exam में ये पूछा गया था कि a person has invested in has done a strategic asset allocation and he has parked 50% in equity. So उन लोग ने 10 lakh का amount दिया था. 50% was invested in equity, 20 in debt, 20 in commodities and 10 in cash. So उसमें दिया था equity has become whatever the amount 70% से बढ़ गया, मतलब 70% हो गया. What is the options available? Okay, तो ऑप्शन उनके पास क्या क्या अवेलेबल है. एक, sell the equity portion, है ना. One is that. Second is he can bring extra money and increase the portion of debt, commodities and cash. Please remember this is also an option. मैं एक्स्ट्रा अमाउंट डाल के बाकी चीजें को बढ़ा सकती हूँ, वो भी मेरे पास एक ऑप्शन है. ओके, तो प्लीज रिमेंबर दैट 100% there will be one question on
either strategic asset allocation or tactical asset allocation. And there is one more term that we will cover when we are covering the last chapter. तो एसेट एलोकेशन के ऊपर एक दो क्वेश्चन पक्का होगा, एक एप्लीकेशन के ऊपर होगा, एक थियोरेटिकल के ऊपर होगा. ओके, नाउ व्हाट इज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन? मुझे लग रहा है कि अभी शायद मार्केट यहाँ से गिर सकता है. ओके, एग्जांपल है, मेरा व्यू नहीं है. तो लेट्स से आई फील मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन. तो मैं चैतली को बता रही हूँ कि बेटा अब मार्केट शायद यहाँ से गिर सकता है. तो व्हाट वी विल डू, हम ये जो इक्विटी का पोर्शन है इसको थोड़ा कम करके डेट को इंक्रीज करते हैं फॉर टाइम बीइंग, मे बी फॉर 3 months or 6 months. So what we will do, we will book our profit, we will exit our holding, and we will park that money into debt. जैसे ही मार्केट नीचे आया, what we will do, we will rebalance it to the same proportion what we had, that is 50-20-20-10. So that is nothing but tactical asset allocation. मार्केट का जो पोजीशन देके आप जो डिसीजन लेते हो टू गेट दैट बेनिफिट ऑफ मार्केट, दैट इज नथिंग बट योर टैक्टिकल एसेट एलोकेशन. या सो आप हमेशा याद रखना, यू विल कम बैक टू योर स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन. Tactical asset allocation is only to take benefit of the current situation. I hope everybody is clear so far. Can I ask few questions if you all will agree with me? So the answer for that is, my God, all the answers are coming. Oh my God. The answer is recency biases. You feel that something has happened recently, based on it, that you are taking a decision. That is called recency biases. Okay, let me give you one more question, then we will go ahead. So this is a type of question. These are the type of questions that will come in the exam. Okay. So if time permits, maybe towards the end or maybe next session, we will add more questions and we will practice more questions. Yeah. So let's come to the second chapter. This chapter is very important to understand, because ये चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको, मतलब आपको म्यूचुअल फंड समझना है, तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हियर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर. इसमें एसेट क्लास के रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आएंगे. सो फॉर एग्जांपल, which among the following asset class can be purchased for consumption purpose apart from investment? Consumption purpose apart from investment. The options are stocks, real estate, bonds, debentures. क्या होगा आंसर बताइए फटाफट चैट बॉक्स में डालिए. Which among the following investment avenue does not offer income on a regular basis? Okay. Please listen carefully. Which among the following investment avenue does not offer income on a regular basis? Real estate, physical gold, stocks, debentures. क्या होगा आंसर? So like this a question comes. Does not offer income on a real estate gives you rent on a regular basis. है ना? So the answer is gold. Stock gives you dividend. Debenture gives you interest. एक और question पूछती, then I'll go ahead. When the interest rate in the economy increases, the price of the existing bond dash increases, decreases, fluctuates. When the interest rate in the economy increases, the price of the existing bond increases, decreases, or fluctuates. What is the answer in this? You're right, what you said. But you have to write the right answer. It decreases. Yeah. So these are the questions that will come from the first chapter. Very easy. Please don't leave that 8-9 marks that comes from there. It is very important. Yeah. Okay. Coming to the next chapter. Here we need to understand the concept. Yeah. Concept is very simple. The role, the advantage, and what are the different type of funds that are there that will be given. This I'm sure you all know. I'm not going deep into it. So based on the investment objective, the amount has been pooled by various investors and invested, and there is a fund manager who will just give me a minute. There's a fund manager who will be investing for you, right? And a fund manager park that money into equity, or he will park into debt or any other instrument for that matter. And whatever is a profit, that will be given back to the client, right? Given back to the investors. And the investor has the right to
So this is how the mutual fund works. Now coming to the what is the role of mutual fund? So this is a very plain, simple thing, but yet this is very important from an exam point of view. So first, the primary role of mutual fund is to help investor to earn an income or to build their wealth. How do they do it? They park their money into equity or debt or different instrument, and based on the investment objective, there are different type of funds that are there in the market. Yeah. So money is being raised from investors. It is given or invested into various instruments. So in a way, it is directly or indirectly benefiting the companies, government, and various projects that are there. And it is used for financing all these things. And in a way, employment is generated, right? This is how mutual fund is industry itself is helping a large number of employers, right? And in a way, it is acting as a money stabilizer in the market. You know, so this comes under what do you say? Uh, Advantages and disadvantages. Role of mutual fund. इस पे ये questions आता है, okay? And this is very important. Please remember, it comes in exam. Now, what is investment objective? Investment objective means मेरा आपका हर एक जन का व्यू क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है मनी को लेके. लाइक इट कुड बी, मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है आई वांट fast return. For that, I am ready to take a risk, right? There will be somebody who said, who says, I don't want to take too much risk, but I want stable return. Somebody who would be saying that I want return as well as risk element reduced. So there will be different objective. So based on the objective, various funds are there, right? Each fund has a different objective. For example, here we have mentioned for equity and overnight fund. So for equity, it is to generate capital appreciation and income from a portfolio. Where they are investing, the amount is invested into equity and equity related. तो आप देखोगे हर एक फंड के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा, right? And investment policy is also mentioned as to that is given right in the start only. What is the investment objective, investment policy, right? There are a few things that you need to remember in mutual fund. One, what is unit? Unit means कि जैसे आप गोल्ड लेते हो तो आपको ग्राम में मिलता है, राइट? तो यूनिट जो है म्यूचुअल फंड का वे ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स होता है, सो सिमिलरली यूनिट्स होता है, राइट? कि आपको कितना यूनिट्स मिलेगा. सो इट कैन बी इन पॉइंट्स आल्सो. Then comes face value. When it is first listed in the market, in NFO, new fund offer, the price is usually 10 rupees. You know? And then comes unit capital. Unit capital is nothing but the number of unit issued by the scheme. If you multiply that with the face value, that will give you the unit capital. Then comes recurring expense. So जो बहुत important है वो मैं specifically बताती हूँ. One is net asset value. Okay, इसका formula exam में आता है. Net asset value is your fund's asset minus your fund's liability divided by the number of units. That will give you net asset value. Basically आपका NAV जिसको हम बोलते हैं, right? जो प्राइस में आपको म्यूचुअल फंड मिलता है और जो प्राइस में आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, the true worth of the mutual fund. Okay, it can increases or it can go down. If market goes down, if it is an equity fund, NAV will go down. If it goes up, the NAV will go up. You know? AUM is nothing but what is the size of that fund. All the number of sum of all the investment that is made by an investor will give you the AUM, right? ये सब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको पूछा जाता है. Advantages and disadvantages. 101% एक क्वेश्चन कम से कम comes from this. Advantages and disadvantages. देखिए ये बहुत ही simple है, yet people make mistake in this. Okay, I'll give you one of few questions which had come in my exam. Okay, one, it gives you a professional management. So there is a professional who is managing it for you. There is a fund manager who is managing it for you.
एंड हर एक चीज बकायदा अगर आपके लिए स्टॉक बाय किया होता है, देयर इज अ कस्टोडियन हु टेक केयर ऑफ इट, है ना. ऑल दोस थिंग्स आर देयर. अफोर्डेबल portfolio diversification. So when you're investing in the units of a scheme, so it is in a way providing you an exposure to a wide range of securities, a wide range of stocks that are ahead. अगर मैं 5,000 रुपए इन्वेस्ट करूं या कोई 1 लाख इन्वेस्ट करूं, तो ऑलमोस्ट हम दोनों को सेम ही अमाउंट ऑफ एक्सपोजर मिलता है, राइट. If I have to put my money into the Nifty 50 stock also, even one stock also, if I have to buy, it would have become very expensive for me, right? But mutual fund give you that facilities. Economies of scale. What it simply means that pulling of large sum of money for many investors makes it possible for mutual fund to engage in professional managers for managing investment. Individual investors, even with a small amount, can invest with the help of professional management, right? And so in a way, this large investment corpus that leads to another economies of scale. तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत कुछ, अगर आप इंडिविजुअली अगर आपको स्टॉक बाय करना होता तो आपको रिसर्च करना पड़ता, आपको एनालिस्ट रखना होगा, प्रॉब्लली आपको एक ऑफिस स्पेस रखना होगा. बट यहाँ पे ये सारा कुछ आपका फंड, आपका म्यूचुअल फंड टेक केयर कर लेता है. सो इन ए वे इट गिविंग यू इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ट्रांसपेरेंसी, आपका जो अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है, यू विल गेट ऑल दैट इन योर फैक्ट शीट. आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा इफ यू आर यूजिंग, इफ यू आर टेकिंग ओल्ड टैक्स regime under section 80C, you get a tax benefit in ELSS scheme up to 1,50,000 का tax benefit भी आपको मिलेगा. And there is liquidity. Liquidity is simply means if you want to sell it, you will be able to sell it by just clicking a button, right? So all these options are available for you. You need to remember. So exam में basically either पूछा जाएगा which among this is not an advantage, or they will ask which among the following is an advantage, है ना. इसका एक क्वेश्चन आना ही आना है. तो मेरे को जो एग्जाम में आया था, तो एक क्वेश्चन ये था, which among the following is not an advantage, and all the advantages were here, and the disadvantage में एक ऑप्शन था choices overloaded. Okay, so what is choices overloaded means, अगर आप देखोगे there are almost 40, more than 44 AMCs मेजर पकड़ो तो, है ना. हर एक के पास इक्विटी में ही बहुत सारा स्कीम्स है. ओके, डेट में भी बहुत सारा स्कीम्स है, हाइब्रिड में भी बहुत सारा स्कीम्स है. सो एज एन इन्वेस्टर इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि बॉस कौन सा फंड लेना है. या दैट इज नथिंग बट चॉइसेस ओवरलोड. लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन. आई कैन नॉट से कि बस मेरे हिसाब से आप फंड लो. आप अगर, आई कैन नॉट से कि प्लीज टोबैको वाला स्टॉक मत लो या अल्कोहल वाला स्टॉक मत लो. So I cannot do all these things. Yeah. Now coming to the classification. Classification में you need to understand few things. But there are different type of the mutual fund. So how do you classify is what the classification will tell you. One is by structure. Structure means कि उसका होल्डिंग कैसा है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, उस हिसाब से आप डिफाइन करोगे, राइट. सो सम स्कीम्स आर ओपन फॉर purchase and repurchase on a perpetual basis. So you can continuously buy and sell. That is one way. One is it is there for a limited period of time. उस टाइम अगर आप बाय कर रहे हो तो वेरी गुड, उसके बाद आप इसको बाय नहीं कर सकते, राइट. So based on that, there are different types. One is open-ended fund. So open-ended fund में क्या होता है, you are allowed as an investor to enter and exit at any time, even after your NFO. NFO खत्म होने, न्यू फंड ऑफर खत्म होने के बाद भी आप बाय और सेल कर सकते हो, जिसको बोलते हैं हम ओपन एंडेड फंड, है ना. So at any time the existing investor can redeem their investment, that is they can sell back their scheme to get their money back, है ना. आप इसको पार्शियली भी एग्जिट कर सकते हो, कंप्लीटली भी एग्जिट कर सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू. सेकंड इज क्लोज एंडेड फंड.
Close-ended means it has fixed maturity. Investor can buy unit of a close-ended fund from a fund only during that period of NFO. NFO के बाद आप buy sell directly fund के साथ नहीं कर सकते. Investor cannot transact in these funds after the NFO is over. However, these funds are compulsory listed in the stock exchange. So when it is listed in the stock exchange, if there is a buyer for it, then you will get to sell it. If there are no buyer for it, you will not get to sell it. So all the close-ended funds are compulsory listed on the stock exchange. So I want to ask you all one question. My question is, if so there is a close-ended fund, okay? Please, मैं ना आपको एक जिस्ट बता रही क्वेश्चन का. I don't of course know the full question, but मैं जो उसका सारांश है वो बता रही हूँ आपको. Right? So a person has invested in, a person want to buy a close-ended fund. Okay, can the price in which he buy be different from that of an NAV? Can the price in which he is buying can be higher than the NAV is the question. Yes or no? Please put in the chat box. Can the price be higher than that of a NAV? A person has want to buy a close-ended fund. Okay. Can the price be higher than the NAV? So NAV जो है वो अलग हो सकता है, but आपको याद रखना है जो price पे he can buy or sell will depend on the market condition. It can be higher or lower, subject to the demand and supply in the market. Correct, absolutely, Manish. It can be higher or lower, subject to the market condition. है ना? ये question आया था exam में हाल ही में, so I'm just telling you all. Another is interval fund. Interval fund is having a property that of a close-ended fund, but it remains open for a particular period of time. Another is a way of defining the type of fund is based on the management style. Whether it is actively managed or passively managed. So actively managed fund, as we all know, the fund manager has a flexibility to choose the stocks in the portfolio, right? Stocks or bonds or whatever. Yeah. Based on the market condition, he will increase the proportion according to the market condition. You know? So that is nothing but your actively managed fund. Another is passively managed fund. So what happened? He invests it on the basis of a particular index. So let's say I have invested into Nifty 50 category. Okay. So Nifty 50 में जो proportion है, उसी proportion में I will allocate my money into various stocks. अगर let's say Nifty में Reliance का percentage है 5%, तो I'll put it exactly 5%. अगर Reliance का percentage reduce हो गया to 4%, तो in my fund also I will reduce it to 4%. This is nothing but passive fund, right? तो passive fund में ज़्यादा कुछ नहीं होता है काम. Fund manager doesn't do too many things, so that is why the cost in this is relatively lesser. Another is called exchange traded fund that we have already seen, right? Exchange traded fund are those mutual funds that are traded in the stock exchange, just like another stock, right? So usually these track an index or probably a fixed portfolio strategy based on some index. Yeah. So basically इनका जो nature है, they are passive in nature. बोलने के लिए these are like normal mutual fund, but only difference being that their open-ended fund have a single NAV at the end of the day, right? But हालांकि ETF में है market demand और supply के basis पे price ऊपर नीचे होता है, right? So again वो कौन से fund है उस हिसाब से उसका liquidity देखा जाएगा. Okay. Now coming to the main or the important part, which is very important from an exam point of view, that is the different schemes that are there in open-ended category. Okay, तो इसमें आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो let me just tell you that also. हर एक का percentage allocation रहता है. This is very important from an exam point of view. This will come in exam. Okay,
हर एक फंड का आपको परसेंटेज याद रखना होगा, ये आपको रट्टा ही करना पड़ेगा। ओके, इक्विटी का तो मैं आपको रट्टा करा दूंगी, डोंट वरी, जस्ट लिसन टू मी, आई विल एक्सप्लेन टू यू, राइट? So equity fund, as the name suggests, the investment is done in the equity. So when we say equity, equity is nothing but shares or stocks, है ना? So uh, तो बेसिकली आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2017 के बाद सेबी ने कैटेगराइजेशन किया, इनको एक गाइडलाइंस दिया कि बस यही कैटेगरी होना चाहिए। नहीं तो क्या हो रहा था, हर एक म्यूचुअल फंड अपने अपने हिसाब, हर एक एएमसी अपने अपने हिसाब से स्टॉक, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो सेबी सेड नो, इन्वेस्टर्स को ये क्लियर गाइडेंस मिलना चाहिए कि बस क्या है, कितना अलोकेशन है ना? तो उस हिसाब से वेरियस फंड है। तो इक्विटी फंड मींस इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं। सो इक्विटी में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, है ना? तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कैटेगरी डेफिनेशन दिया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप मतलब जो फर्स्ट 1 to 100 स्टॉक जो होता है according to market capitalization, that is called large cap. 101 to 250, that is mid cap. 251 and below is considered as small cap, right? अब इसका खास बात क्या है? Large cap means they are more stable, more predominant in the market, and they have seen multiple cycles in the market, जिसकी वजह से ये इनका जो प्रॉफिट है काफी काफी कैश रिच कंपनीज होते हैं, राइट? सो इफ मार्केट गोज डाउन, दिस डजंट फॉल टू मच, है ना? बट it doesn't mean कि it will give you a very bumper return also, but it will give you ठीक ठाक return. So the best way to remember is like, for example, सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, राइट? इनकी मूवी कैसे भी हो, एक एक पर्टिकुलर कलेक्शन तो होते ही होते हैं, है ना? So that is what is large cap. Mid cap means it is that category जो यहाँ जो ओके ओके स्टेबल है, यहाँ से बहुत अच्छा भी जा सकता है, हो सकता है खराब भी जाए। ओके, सो द बेस्ट वे टू रिमेम्बर इज लाइक फॉर एग्जांपल विकी कौशल जब आया था, उनका जो स्टार्टिंग की मूवी एकदम बोरिंग थी, पर जैसे वो उरी आया, राइट, उरी आया एकदम हिट होने लग गया। देन प्रोबेबली उरी के बाद अभी हाल ही में एक मूवी आया था, व्हाट वाज दैट मूवी, छावा छावा, राइट? तो उसमें उनका, करेक्ट, सो उसमें उनका जो रिकग्नाइजेशन बहुत ही हाई हो गया, राइट? सो सिमिलरली मिड कैप इज लाइक दिस। मिड कैप में आप लेट्स से एक 250 रुपीज है, ये 250 से 600 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, और हो सकता है इसके नीचे भी आ जाए, राइट? सो दैट इज मिड कैप। स्मॉल कैप इज लाइक आइदर 4, 6 और 0, है ना? तो जीरो तो नहीं होगा, अगर आप मार्केट में वो कोई भी फंड को होल्ड करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, 15 years, वो रिकवर तो कर ही जाता है ना? तो अपने म्यूचुअल फंड में वो जीरो का गुंजाइश बहुत ही कम है ना? सो दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड द वेरियस फंड। अब कितना अलोकेशन, कितने मतलब कितना अलोकेशन है ईच ऑफ द फंड? सो देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ फंड। ओके, if you have to ask me, I will give you a very simple way of remembering it, है ना? आपको तो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है ना? सो देयर आर फंड विच आर लाइक, तो पहली बात तो अगर एक इक्विटी फंड बोलने के लिए इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी हैज टू बी 65%, मिनिमम 65% ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैज टू बी देयर इन द इक्विटी, है ना? पहला कैटेगरी तो ये है, okay? तो ही वो इक्विटी फंड कहला जाएगा। नाउ there are various funds based on where the investment is there. So, for example, large cap fund means the investment सबसे ज़्यादा large cap stocks में है। तो 80% of the investment is there in the large cap stocks, है ना? Mid cap मतलब mid cap stocks में ही invest करेंगे, okay? तो minimum 65% has to be there in the mid cap. Remaining can be anywhere. Okay, it can be in the large cap, it can be in the small cap. That is up to the fund manager's call. Small cap means minimum 65% has to be in the small cap. Rest it can go anywhere.
अब इसका कॉम्बिनेशन लार्ज और मिड कैप फंड, मतलब लार्ज कैप भी है मिड कैप भी है, दैट इज लार्ज एंड मिड कैप फंड. देन देयर इज a category called मल्टी कैप. मल्टी कैप में आपको लार्ज भी मिलेगा, मिड भी मिलेगा एंड स्मॉल कैप भी मिलेगा. बट सेबी ने कहा कि बेटा 25% हैज टू बी देयर इन ईच ऑफ द कैटेगरी. मतलब 25 लार्ज कैप में होना चाहिए, 25 में मिड कैप में होना चाहिए एंड 25 स्मॉल कैप में. बाकी फंड मैनेजर की मर्जी, इफ ही फील मार्केट इज इन अ बुल रन ही कैन allocate into mid and small. If market is into a negative phase, then he can park for safety into large cap category. तो फंड मैनेजर बोला अरे मेरे पे इतना रेस्ट्रिक्शन रखा है, मुझे भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. तो देयर इज वन मोर कैटेगरी कॉल्ड फ्लेक्सी कैप फंड. In flexi cap fund also investment is done across the category large cap, mid cap and small cap. But as per the fund manager's view on the market, he can maneuver it anywhere according to the market condition. Okay. इसके अलावा भी there are few categories like focus fund wherein the exposure is majorly into maximum 30 stocks. अगर ये 30 stocks बहुत अच्छे से चल गया तो very good, otherwise fund will मतलब they what the criteria is, बस ये 30 stocks ऐसे अच्छा ढूंढ के लाता है कि इसमें से उनको रिटर्न मिलना चाहिए, है ना. तो that is focus fund. Then there is ELSS category. ELSS category में investment is done into equity. Again, 80% of the investment is done into equity. And इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा अप टू 1.5 लाख अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम. 80C का बेनिफिट है, राइट. 3 years का लॉक इन पीरियड है. एक क्वेश्चन ELSS पे 101% आएगा ही आएगा. ओके, प्लीज रिमेंबर ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ये बेनिफिट मिलेगा. न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. देयर इज नो डिफाइंड टाइम कि इतने पीरियड तक रुकेंगे, नो, नथिंग लाइक दैट. If I understood your question correct, Munish, I hope your question is the same thing. The fund manager can maneuver it according to the market condition and according to the uh, risk appetite or the investment objective, है ना. या तो ELSS पे एक क्वेश्चन आएगा. ओके, नाउ लेट मी मेक यू ऑल बाय हार्ट दिस. तो अगर आप देखें 80% की कैटेगरी में, अच्छा सॉरी, बिफोर आई गो इनटू दैट, there is one more category called, there are few more categories which we need to understand. One is sector fund and thematic fund. So sector fund is like a particular sector, like banking sector, sugar sector, or cement sector. So these are sectors. Then there are something called theme. Theme is like infrastructure sector theme. Okay, so it's one theme under which various sectors are there. So इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको सीमेंट आएगा, रेलवेज आएगा, एयरवेज आएगा, आपको मेटल आएगा, है ना. ये सब कुछ आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, या मेक इन इंडिया फॉर दैट मैटर. सो दीज आर थीम, है ना. तो थीम हैज मल्टीपल सेक्टर्स इन दैट. या तो सेक्टर में क्या होता है, अगर वो सेक्टर चला नहीं, फॉर एग्जांपल सीमेंट सेक्टर चला नहीं तो लॉस हो जाएगा. सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छे से चल गया तो प्रॉफिट होगा, राइट. लेकिन एक थीम के अंदर बहुत सारे थीम, मतलब सेक्टर, लाइक फॉर एग्जांपल कंजम्पशन सेक्टर्स, है ना. तो कंजम्पशन सेक्टर मतलब इसके अंदर बहुत कुछ आ गया, FMCG आ गया, बैंकिंग आ गया, IT आ गया, बहुत कुछ आ गया, राइट. सो दैट्स अ थीम. I'm just taking the chat box whether there is no limit on the number of stock in any, like no. Only in focus fund there is a limit of 30 stock and others there are no limit. Okay, no limit का मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स ले लेंगे. या सो अगर आप हर एक फंड का फैक्ट शीट देखोगे आपको समझ में आएगा कितना स्टॉक्स है. ओके, नाउ कमिंग टू आवर बाय हार्टिंग पार्ट. तो अगर आप ये पूरी कैटेगरी देखोगे 80% में कैटेगरी में कुछ things आते हैं. One is the large cap fund, that is 80% has to be in large cap.
Then comes sector and thematic. 80% exposure has to be in that particular sector or a theme. Then comes ELSS fund, जिसमें again 80% of the position has to be there in the equity, है ना, एक कैटेगरी आ गई। इसके बाद तो 80 में आपको तीन कैटेगरी है, लार्ज कैप, सेक्टर एंड थीमेटिक एंड ELSS। नेक्स्ट इज 75%। 75% में आपको मल्टी कैप आएगा। मल्टी कैप में 25 इन लार्ज कैप, 25 इन मिड कैप एंड 25 इन स्मॉल कैप। ओके, इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसमें 35% हैज टू बी इन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। ओके, 35 प्लस 35 70, राइट, 74% है। तो हमने 80 देखा, 75 देखा एंड नाउ इज 70 में लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसके अलावा बाकी सारा फंड कम्स अंडर 65%। ओके, योर फ्लेक्सी कैप फंड, योर वैल्यू फंड, your large mid cap fund, your small cap fund, all this will come under 65%. Okay, then there is fund of fund, sorry, no, there is what was that, focus fund, which is 30 stocks maximum, है ना। इस पे क्वेश्चंस 100% आता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस, इट कम्स इन एग्जाम। या so that's it on equity. Then comes debt market. So debt market में how you will categorize it based on where the investment is done. Okay, one, based on the credit quality and based on the maturity. Okay, maturity means कितने टाइम फ्रेम, जो भी पेपर्स में इन्वेस्ट किया है उसकी मैच्योरिटी कितने टाइम में है, दैट इज व्हाट द मैच्योरिटी विल से। सो जिनका मैच्योरिटी बहुत लंबे टाइम के बाद है तो रिस्क इन दैट इज रिलेटिवली हायर। जिसका मैच्योरिटी अभी है तो तो उसमें रिस्क रिलेटिवली कम रहता है। ओके, so there is few categories like overnight fund where they invest into those securities which wherein the maturity is within 1 day. So when it is 1 day, the risk is very, very less. Then there is liquid schemes wherein the investment is there into debt market and money market securities where the maturity is within 91 days. You know? Then there are various category like short duration fund, low duration fund, मनी मार्केट। इसमें आपको ये जो ड्यूरेशन है ये आपको याद रखना है। ओके, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब 3 to 6 months, लो ड्यूरेशन मतलब 6 to 12 month। मनी मार्केट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी क्वेश्चन बहुत आता है, विच इज मैच्योरिटी इज अप टू 1 year, राइट। तो ये पूरा टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखना है। डायनामिक बॉन्ड फंड, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ड्यूरेशन का, यू कैन इन्वेस्ट अक्रॉस द ड्यूरेशन, राइट। देन देयर इज कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड पे भी क्वेश्चन आता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड मतलब ये सिर्फ वही बॉन्ड्स पे इश्यू करता है, मतलब इन्वेस्ट करता है जो विच आर इश्यूड बाय द कॉर्पोरेट्स। ओके, सो बस सेबी ने ये कैटेगरी दिया है कि बस आप रिलेटिवली सेफर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करोगे, दैट इज AA+, राइट। AA+ एट अबव मतलब इसका सेफ्टी इज एट हाईएस्ट रिकॉर्ड, राइट। इसमें रिस्क इज रिलेटिवली मच मच लेस, है ना। हियर आल्सो 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज डन इन हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स AA+ एंड अबव। ओके, अगर आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहिए देन यू विल पार्क योर मनी इनटू क्रेडिट रिस्क फंड। So when we park into credit risk fund, again this is issued by the corporate bonds, but only criteria is the rating of those bonds can be anywhere below AA and below. तो मतलब इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, तो रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी आपको थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, राइट। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड से आपको बेटर रिटर्न आपको क्रेडिट रिस्क फंड में मिलेंगे। बट अगर आपके क्लाइंट सेफ्टी देखना चाहते हो तो प्रोबेबली ही विल लुक फॉर इन्वेस्टिंग इनटू कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। देन कम्स बैंकिंग एंड PSU फंड वेयर द इन्वेस्टमेंट इज
done into those instruments which are issued by banks and PSU. Then comes gilt fund. Gilt fund means जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसी में इन्वेस्ट करते हैं. सो दोज विच आर इशूड बाय गवर्नमेंट is what is GSEC means, right? So 80% of the investment is done in GSEC across the maturity, है ना. गिल्ड फंड पे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इधर गिल्ड फंड पे आएगा या गिल्ड फंड विद 10 years कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन पे आएगा. दोनों में से एक सवाल पूछेंगे. आपको याद रखना है in terms of credit risk, it is lowest in gilt securities because it is issued by government. The chances of government defaulting is very, very low. Then comes floaters fund. So इसमें floating rate instrument है, मतलब इसमें rate कुछ fix नहीं होता है. It can be fixed or floating, है ना. Minimum 65% of the investment is done. There are hybrid categories. Hybrid category means those category where you get a benefit of investing into equity and that of debt. Okay. First one being conservative. As the name suggests, तो कितना आप कितना होल्डिंग इक्विटी में उस हिसाब से आपको वेरियस फंड का नाम मिलेगा. तो एक्सक्यूज मी, conservative fund, as the name suggests, the investment in equity is very, very less. Anywhere from 10% to 25% of the investment is there in the equity. The remaining is there in the debt instrument. Anywhere from 75% to 90% is invested into the debt instruments. Then comes balance or hybrid category. सभी ने मैंडेट दिया कि इधर आप बैलेंस कैटेगरी में बैलेंस हाइब्रिड ला सकते हो या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड. आप दोनों नहीं ला सकते हो, एक एएमसी है ना. तो बैलेंस में एज अ नेम सजेस्ट इधर 60% इक्विटी में होगा तो 40% डेट में है, 40% इक्विटी में है तो 60% डेट में है. तो इसमें कोई आर्बिट्राज ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इन बैलेंस कैटेगरी. एग्रेसिव हाइब्रिड में equity ka portion can go from anywhere from 65 to 80%. Okay. And debt ka it can be from 20 to 35% in case of aggressive hybrid category. Okay. Mutual Fund of India has permitted to offer either aggressive hybrid category or balanced fund. है ना, दोनों में से एक ही अलाउड है. इसके अलावा there is something called dynamic asset allocation or probably multi-asset or arbitrage fund, है ना. So multi-asset is again a very important category from exam point of view. तो multi-asset में गवर्नमेंट क्या सेबी क्या बोलता है कि आपको मिनिमम 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है. ओके. तो आप इक्विटी एंड डेट के अलावा भी और कोई कैटेगरी, तो इट कैन बी कमोडिटीज, इट कैन बी इंटरनेशनल इक्विटी, इट कैन बी एनीथिंग, है ना. So minimum 3 asset class has to be there to be known as multi-asset allocation fund. And हर एक category में minimum 10% allocation has to be there in each of the asset class. है ना. Arbitrage fund again 65% जो equity है वो या equity related instruments में होना चाहिए. And primarily investment is done in arbitrage opportunity. राइट. इसके अलावा अगर सोल्यूशन फंड है, भाई इतने सारे फंड आपने देख लिए तो एज ए लेमैन इन्वेस्टर्स गेट कंफ्यूज्ड, है ना. सो इन्वेस्टर्स एक बताओ मुझे एक ऐसा फंड जिसमें मुझे रिटायरमेंट के लिए लेना है या मुझे मेरे बच्चे के लिए लेना है. सो सेबी ने एक सिंपल सा फंड बनाया जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन फंड. सो अगर आप रिटायरमेंट के लिए देख रहे हो तो रिटायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हो, बच्चे के लिए देख रहे हो तो बच्चे के हिसाब से डाल सकते हो, है ना. ये एग्जाम में आता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई टेल यू व्हाट कम्स इन एग्जाम. सो दोनों का लॉक इन है 5 years, है ना. रिटायरमेंट में रिटायरमेंट एज और 5 years विच एवर इज अर्लियर. चिल्ड्रन फंड में एट एज ऑफ मैच्योरिटी और 5 year विच एवर इज अर्लियर. ओके. सो मेरे एग्जाम में ये आया था कि अनीता हैज इन्वेस्टेड इन चिल्ड्रंस फंड फॉर हर डॉटर हु इज 16 years old.
what is the maturity of that fund? What is the lock-in period of that fund? No, it is 2 years. So age of maturity is 18 years, है ना? बच्ची की एज 16 है तो maturity होगा 18. So there is a lock-in period for 2 years in this case, not 5 years. है ना? So you need to see this. ये सेम क्वेश्चन आएगा आपको रिटायरमेंट के लिए भी. उन लोग रिटायरमेंट एज देंगे 60 इयर्स और उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है. दिस कम्स इन एग्जाम. ओके ओके, जो एकदम इम्पोर्टेंट है वही मैं कवर कर रही हूँ, बाकी मैं एग्जिट कर रही हूँ. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर. ये चैप्टर आपको मेजरली percentage is what they ask in this question in the exam, है ना. आपको ये पूरे चैप्टर में आपको समझना है कि ये फंड क्या है, बिकॉज एग्जाम में आता है. ओके, so let me ask you all few questions, then we will go ahead to, if you all allow me, we will cover one more chapter. Each mutual fund must have stated investment objective. State true or false. Okay, only Nidhi has answered. Thank you, Dinesh. Okay. Yes. Each fund will have a stated rule. Which amongst the following categories of mutual fund will have fixed maturity date? Open-ended fund, exchange-traded fund, closed-ended fund, or interval fund? Okay, I may not have discussed this, but I'm just asking you. What percentage of open-ended debt funds, नहीं ये बाद में chapter में आता है, but still I'll just ask this question because it is very important. What percentage of open-ended debt funds total asset must be maintained in liquid asset? 10%, 12%, 15%, 25%. Option दे रही हूँ sir. What percentage of open-ended debt funds total asset must be maintained in liquid asset? 12%, 15%, 25%, and what is the other one? 10%. The answer is 10%. Okay, the answer is 10%. I know I have not discussed this. This is not in this chapter, but this is important, so I thought I'll ask you. Okay. One more question I'll ask, then we'll go to the next one, next chapter. What is a flexi-cap fund's minimum equity and equity-related asset investment? 80%, 65%, 75%. The answer is 65%. No, 65%. 80% में सिर्फ large cap, ELSS, sector and thematic will come. Okay. Then was 75 which we discussed. है ना? Okay. Can I ask one last question? फिर अपन जाते हैं आगे. Where was that? After a close-ended funds, new fund offer has closed, a person can purchase the fund's listed units. Okay, options are at price usually higher than NAV, at price usually lower than NAV, at price which can be higher or lower than NAV. You want me to repeat the question? I'll again repeat it. After a close-ended fund's new fund offer has closed, a person can purchase a fund's listed unit at a price usually higher than NAV, at a price usually lower than NAV, at a price which is higher or lower than NAV. Actually, और एक option है, units of a closed-ended fund cannot be brought after NFO, है ना? वो भी question option में दिया है. Yes, the answer is 3. It can be higher or. So before I go to the next topic, let me ask you all, should I go for the next topic or shall we wind up? Oh, if you all allow me, and I'm not showing any screen, just give me a minute. If I will take a very small chapter, but a very important chapter, that is on scheme related document. I wanted to take the 12th chapter, but we will not have that much time for the 12th chapter. I'll be more happy if you could tell me what would be the result. I often, whenever it is any, be it a SIF session
or be it NISM 5A session or common derivative session, I often wait for people to respond ki how is the marks or whether you guys have cleared it or not. So I'll be very happy if you could inform me whether you have cleared the exam or not. Yeah, so we will take one last chapter for the day and then we will, wind up. Legal structure, I will explain a bit. It is all theoretical. You will have to read it. अगर आप इसको ऐसे ही रीड करने जाओगे, ट्रस्ट मी आपको कुछ याद नहीं रहने वाला. ओके, तो पहले आप मेरी तरफ ध्यान दो, मैं आपको इजी वे समझाती हूँ. ओके, फिर आप इसको समझने की कोशिश करना. देन यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बेटर. ओके, तो ये जो चैप्टर है इसमें आपको स्कीम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं. ओके, सो देयर आर 3 स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं. स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, SID जिसको बोलते हैं. अनदर इज SAI and another is KIM. YouTube videos is available for this session recording. No, sir. Please do not upload in any YouTube. Please do not do that. Actually, recording itself is not allowed by Nippon, but it is for greater cost, so it's fine. Coming back, let's find it up faster. SAI, SID, and KIM. KIM, Key Information Memorandum. Okay, these are the mandatory doc. So, अगर आप देखोगे, how you will remember this? एक है SID, SAI and KIM. ओके, SAI साई. ओके, तो हम बोलते हैं ना सबका भगवान एक, साई बाबा. ओके, सो वन, सबका भगवान एक है ना, साई. ओके, सो साई इज कॉमन फॉर ऑल, वन फॉर ईच AMC. ओके, इसमें आपको सारा स्कीम का एक ही SAI होगा. ओके, वो एक ही डॉक्यूमेंट होगा, SAI, which is related to that AMC. ओके, इसके बाद आता है SID. SID is with respect to different schemes. Okay, with different schemes there will be different SID, scheme information document. हर एक AMC का एक ही SAI होगा. ओके, तो अगर मुझे पूछना है कि निपॉन इंडिया के बारे में, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में, देन यू विल गेट दैट इन SAI. दैट विल बी कॉमन अक्रॉस द फंड. अगर आपको जानना है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड या निपॉन इंडिया MNC फंड, वो आपको इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा? आपको मिलेगा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड SID. ओके, तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा, एनीथिंग रिलेटेड टू स्कीम, that will be there in your scheme information document. Anything related to the AMC or their general things, that will be there in SAI. Okay, अब अगर आप देखोगे ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है, इज अबाउट 150-180 पेजेस का. ओके, तो ये कोई भी क्लाइंट रीड नहीं करता. मैंने आज तक नहीं रीड किया. आई हैव skimmed through the document because I have to take session, right? Otherwise, these are not read by anybody. That is why there is a short version of both this SAI and SID that is called key information document. Okay, so you need to remember this way, and if you answer, you will be able to clear this. है ना? याद रखना, these are made in a format which is prescribed by SEBI and it is submitted to SEBI. Okay, SEBI only vets this document. They do not approve anything. Okay, they give their observation. They do not approve or disagree or disapprove any of the scheme related document. It is just the observation that is shared by SEBI. Okay, this comes in exam, please remember. Okay, so however, among all the document, KIM is something that has to be mandatorily given to the investor at the time of filling the form. है ना, फॉर्म के साथ बकायदा KIM की डॉक्यूमेंट देना बहुत जरूरी है. And it is expressed that they should read it carefully. Yeah. So having understood SAI, SID, now when you read this chapter, you will understand this chapter better. है ना.
So if I have to simply tell you what is SID scheme information में, आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, आपको इसमें आपको रिस्क फैक्टर्स मिलेगा वो पर्टिकुलर स्कीम का, where the investment is done, name and type of the scheme, asset allocation pattern मिलेगा. So all the information which is related to that scheme, right? SAI में आपको पूरा वो AMC के related आपको documents मिलेंगे. With these thing into mind, if you start reading that paper, your workbook, you will understand this better. With this, we will end it here. I'm really not in a condition to take further. Yeah, I'm just going through the chat box. Just give me 1 minute. Please give some time and read material after some time. Please organize one more session to clear and give us regular. Okay. Madam, at the end of the session, kindly arrange the latest examination method. Okay. So what we will do is we will share a workbook with all of you, right? In the workbook, you can go through the workbook. We will have our next session in on 18th of this month. So get back to me on whatever we have covered. And try reading. So we finished first, second, and fifth chapter. Try reading sixth, seventh, eighth. That is all theoretical. We won't be covering in the class. We will cover 12th chapter. We will cover ratios. And we will cover legal, the third chapter. That is also a little important. We will cover that in our next session. Taxation may, there are very few things that you need to remember from a taxation point of view. That also I'll explain you. इतना ही आपको पढ़ना है, आपको उससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है taxation में, right? So Chaitli will share the PDF with you. Please go through it, and that's it. Any doubt? Please get back to me next. I hope by next class I'll be in a better condition to take note. Thank you, Bensi. Actually, it was really good of you that with all the bad cold also you were there for us. So thank you. My pleasure. Thank you. Thank you so much.